Hello my dear students, once again I am here. This time we are going to solve exercise 14.2. We have already solved question number 1 of exercise 14.2. Now let us see question number 2. What is there in question number 2? As you can see that every time you can see the questions that there are two squares in minus, and whenever there are two squares in minus, a square minus b square is there, the identity applied will be a minus b and a plus b. So you can say that in all the questions of question number 2 we are going to apply the same identity. Now what the question number 1 is saying, 4p square minus 9q square. So you can see that there are two squares which are there in negative with negative sign. So it will be 2p whole square and 3q whole square. So now the value of a is 2p and the value of b is 3q. Substitute this in this, you will get your answer. So 2p plus 3q and 2p minus 3q. So this way we will have to solve this when two squares are in difference. Okay. Similarly, sometime you will find that the squares are not perfectly given. Like in question number 2, it is 63a square minus 112b square. So you can see that 63 is not a square of anything, and neither 112 is also a square. So what is the problem in this question? That before applying a square minus b square, we will have to take something common from it, and that common will be 7. So when we will take common 7, it will become 9a square, 7 9 is 63, and 16 7 is 112. So it will become 16b square. And once you have taken common, then you can see that 9 is the square of 3 and 16 is the square of 4. So 7 will remain like this, and this will become 3a whole square, and this will become 4b whole square. And now this is a square minus b square. So identity will be a minus b, a plus b, and hence the answer will be 3a plus 4b and 3a minus 4b. I'm very sure it is clear in your mind. So once you see that the squares are there in negative, but you cannot see any square, so just think of that, can anything be taken common? Yes, and once you will take common, then you will find that the squares are automatically made. Okay, so this was question number 2. Let us see question number 3. In question number 3, it is direct, like 49x square minus 36. So it is direct, that is 7x ka whole square and that is 6 ka whole square. So 7x plus 6, 7x minus 6. This way, this was an easier one. Now, once again in question number 4, what has happened? You will have to take something common. 16x to the power 5 minus 144x cube. So whenever we will take common, we will take maximum common. जो भी common आ रहा है maximum common लेंगे हम. तो you can see that 16 is common amongst 16 and 144, तो हमने 16 common लिया, और x cube यहाँ भी है, so x cube is also common. So 16x cube common चला गया, 5 power में से 3 power common, so I got x square only, and 16 9s are 144. So what left with me is x square minus 9. So this way, here I can apply 16x cube is like this only, and this is the square of x, this is the square of 3. So in the end, 16x cube, x plus 3, x minus 3. I'm sure it is clear in your mind. And this way we will keep solving question number 2. Let us see a few more parts, because 2 questions are there in it which are very very important, which you will have to, why they are important? Because in those questions you will have to apply more than one identity. एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा आइडेंटिटी लग रही है, इसलिए उन क्वेश्चंस को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं. ओके, लेट अस सी. But before that, we are solving few more questions. Now let me tell you the 5th part. Question number 2, part 5th. What it is saying? L plus m whole square minus L minus m का whole square.
Now in this, two squares are there, and they are in the in difference. So if I take this as A and this as B, so in one bracket both of them will be added, in another bracket both of them will be subtracted. So L plus M plus L minus M, and L plus M minus L minus M. Now put the implication of sign. So L plus M plus L minus M, L plus M minus L plus M. Here you can see L and L is cancelled. Here you can see M and M are cancelled. So we got 2L from here, we got 2M from there, and in the end 4LM is the answer. So once again I would like to explain it to you that here it is L plus M whole square, it is L minus M whole square. Consider it A square, consider it B square. So A plus B, A minus B. Bracket में हमने इसलिए रखा because negative sign will make impact on the signs inside the bracket. Plus से कोई impact पड़ा नहीं. L plus M plus L minus M, L plus M minus L plus M, L से L cancel. So M और M 2M, L or L 2L, 2L into 2M is 4LM. I hope it is clear to you. Now have a look at the question number 7. 6 I am not doing, that is a simple one, so that you can do on your own. I am solving part number 7 for you. The questions I was talking about is question number 7th and 8th. Okay, so here we are going to do question number 7th and 8th. What is there in question number 7? X square minus 2xy plus y square is kept in a bracket, and then minus z square. And why he has kept it in a bracket? Because this is the whole square of something. If you will see it carefully, then you will find this is the whole square of a minus b. This is a square plus b square minus 2ab. This you have done in the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही तो किया था, ऐसे दिया हुआ था, उसको हमने क्लोज किया था. सो दिस हैज बिकम x माइनस y का होल स्क्वायर, एंड दिस इज z स्क्वायर. सो दिस इज a, दिस इज b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब एक ब्रैकेट में x माइनस y के साथ प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y के साथ माइनस. x minus y plus z, x minus y minus z. So one identity we have applied here, x minus y whole square, or one identity we have applied here, a plus b, a minus b. That is why it is considered important. And so here it is given direct, a square plus b square minus 2ab. Sometimes it is not given direct. He may ask you to make it the square, and then for example अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ यहीं पर 121x square plus 144y square or plus 11 into 12, 12 into 11 is 132 and 264, 264xy minus z square. अगर इसी का मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया कि ये तो डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मेक इट 11x का होल स्क्वायर प्लस 12y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11x इंटू 12y, और ये तो z स्क्वायर है ही. Now this all has become the whole square of 11x plus 12y. This has become a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, or minus z square. So a square minus b square. So in one bracket 11x plus 12y plus z. In another bracket it will be 11x plus 12y minus z. So this way I have taken another example of the same question. You can solve this also as the addition. 8th are there in your book, so you can solve it as 9th. 9th के नाम से इसको भी solve कर लीजिए, so that you can get a good practice. Now 8th one is also quite important. Let us say 8th one. What is there in 8th? 8th and 7th are quite similar. Here a plus b whole square is given in the beginning and minus z square is there. In 8th, z square is in the beginning and a plus b whole square is given here. And there in the sign is in between is minus, so that sign is also making the difference. Now we are solving question number
Part number 8 of the same question. 25, and there the square is also not direct. Like here it was direct, there it is not direct. 25a square minus 4b square plus 28bc minus, it is plus na? Yes. Minus 49c square. Now, while you do the whole square of something, like if you are doing b square plus c, if you are doing the whole square of b plus c का अगर आप whole square कर रहे हैं, तो every time what will happen, b square plus c square plus 2bc. So 2bc is telling us that it is the whole square of b plus c, and plus is telling us it is the whole square of b plus c, or minus will tell us it is the whole square of b minus c. प्लस और माइनस से हमें पता चलता है. अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि जब हम देख रहे हैं तो हमारे हमेशा व्हाट हैपेंस, दीज टू शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी नेगेटिव. आइदर अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऑल द थ्री शुड बी पॉजिटिव. और अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. 2 should be positive, 1 should be negative. But here it is reversed. You can see here it is reversed. How? 2 are negative, 1 is positive. और होना क्या चाहिए? 2 positive और 1 negative. और ऐसा क्यों हो रहा है? Because this is at the second place. Second place पर है. Second place पर है तो minus का impact इसमें लग गया है. तो first of all what we will do, we will take minus common from it. जैसे ही minus common लेंगे तो जो minus 4b square है ये plus 4b square बन जाएगा. प्लस का 28bc माइनस का 28bc बन जाएगा, और माइनस का 49c स्क्वायर प्लस का 49c स्क्वायर बन जाएगा. सो नाउ यू कैन सी दैट देयर आर 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, सो इट इज अपीयरिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये ऐसा लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पर किसका है वो अभी अभी हमें पता करना बाकी है. सो 5a का होल स्क्वायर, ये हो गया 2b का होल स्क्वायर, 49 हुआ 7c का होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c. देखें क्या बराबर हुई बात, 7 टू जा 14 टू जा 28, यस 28bc बराबर हो गई बात. यानी कि ये है माइनस की वजह से 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ये है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर. और अब देखिए ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो हम क्या करेंगे, 5a प्लस 2b माइनस 7c और 5a माइनस 2b माइनस 7c. सो व्हाट वी कैन डू, 5a plus, because of plus there will be no change in the sign, but due to minus there will be change in sign. So 5a minus 2b plus 7c. Quite an important question for this exercise. Okay, so once again I would like to explain you. एक बार फिर से समझ लीजिए आप, और फिर मैं एक इसका एग्जाम्पल भी और करके दिखाऊंगा. 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर. bc जैसे ही यहां पर आया, जैसे यहां पर a भी आया तो a प्लस बी, a भी आया तो a माइनस बी. bc जैसे ही यहां पर आया, मुझे पता चलना चाहिए कि b और c मिलाकर होल स्क्वायर बनाएंगे. a square will not make whole square. Whole square will be made by b and c. As you can see in the previous question, x y एक साथ आए थे तो x और y मिलाकर होल स्क्वायर बना रहे थे, z नहीं क्या बना रहा था. अब होल स्क्वायर में दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि होल स्क्वायर के लिए या तो होने चाहिए तीनों प्लस, या 2 प्लस और 1 माइनस. लेकिन यहां पर है उल्टा, 2 माइनस 1 प्लस. और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज माइनस साइन इज मल्टीप्लाइड विद इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू टेक माइनस कॉमन. हर बार यही करना पड़ेगा, पहले माइनस कॉमन निकालिए. माइनस कॉमन निकाला तो 4b स्क्वायर प्लस बन गया, 28bc माइनस बन गया, 49c स्क्वायर प्लस बन गया. अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है. तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली किसका होल स्क्वायर है. 25 है 5a का होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर इज 2b का होल स्क्वायर, 49 इज 7c का होल स्क्वायर, और ये टर्म होगी 2ab, तो 2a की जगह 2b और b की जगह 7c, एंड हेंस वी गॉट 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर. अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी,
प्लस में साइन पर कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस की वजह से साइन में चेंज आएगा, और बाद में वो सॉल्व हो नहीं रहे। सो दिस वे दिस विल बी द आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। होप इट इज क्लियर एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दिस। ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। लेट मी सी, मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं ऐसा, सो दैट यू विल प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। अपने आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसकी। ओके दैट वाज 9th, सो दिस इज 10th, है ना। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व करेंगे, मैं बस दे रहा हूं। 25x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर माइनस 84yz। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, उसी की तरह आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट इट विल बी डन। नाउ with that, this is question number 2 of 14.2 is finished. Let us see question number 3. Question number 3 is not having any identity used. This is more or less based on the taking common one. The taking common concept is more there. So question number 3 part 1. The question is ax square plus bx. Ax square, sorry, it is ax square plus bx. So what is common? X is common. What left? Ax plus b. So this was question number 1. Second is 7p square plus 21q square. So what is common? You can take 7 common from it. So what left is p square plus 3q square. P square plus 3q square. Okay. Similarly, you can take the third one. Fourth is the regrouping one. फोर्थ में रीग्रुपिंग करनी है। फोर्थ में आपको बताऊं जैसे am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। अब चाहो तो दोनों ए वाले को एक साथ ले लो, चाहो तो दोनों m स्क्वायर वाले को एक साथ ले लो। तो यहां से मैंने m स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा a प्लस बी, और यहां से मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा b प्लस ए, और b प्लस ए और a प्लस बी तो एक ही बात है, पॉजिटिव है दोनों, तो a प्लस बी कॉमन, तो अल्टीमेटली m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, दिस वे इट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। देन लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 ऑफ इट। lm plus l plus, this is given in one bracket, and in another bracket it is m plus 1. So what can be taken common from the first bracket? That is l common, तो बचा m plus 1. And what is common from the second? कुछ भी common नहीं है, कुछ भी common नहीं, तो 1 common, तो बचा m plus 1. And now you can see m plus 1 is common from both of them, so m plus 1 common, l plus 1 common. So we got m plus 1 and l plus 1. Okay, I hope this is simply the repetition of exercise 14.1. 14.1 का ही repetition है ये, कुछ नया नहीं है, and you can solve it very easily. Let us see a few more parts, and like question number part number 7, I would like to do 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz. 2yz. So what is common from the first two terms? The common is 5y. So what left is y minus 4. And what is common from here? If I will take 2z minus 2z, it become 4 minus 2y. So right now the brackets are not same. It means they are not in the right order. Their order is to be changed. So what I will do,
and you can see that the difference is only of sign. So I will change the position of these two. 5y square minus 20y plus 2yz minus 8z. Now if I will take common, 5y is common, y minus 4 plus ka 2z is common, so y minus 4. Yes, now they are same. So y minus 4, 5y plus 2z. This was question number part number 7. So some questions will be there in which you will have to do regrouping. Okay, I'm very sure you can solve these questions, and the homework for you will be question number 2 and 3 of exercise 14.2. Exercise 14.2 question number 2 and 3, and those extra questions also, and these questions you will upload to me by tomorrow evening. Okay, and thereafter rest of the question of 14.2 we will discuss in next of the class. Okay, till then complete your work and take care.